The topic for today that we are going to study is Syed Ahmed Shaheed Barelvi. Syed Ahmed Shaheed Barelvi is the second reformer of our chapter Religious Thinker. Today, again, like the first topic, we are going to break this topic as well into four subtopics. We'll be firstly discussing who was Shah Waliullah, then we'll be who was Syed Ahmed Shaheed Barelvi, sorry. Then we'll be discussing what were the beliefs of Syed Ahmed Shaheed Barelvi, what were the works of Syed Ahmed Shaheed Barelvi, and finally what was the significance and the importance of the works of Syed Ahmed Shaheed Barelvi. So, like the first topic of Shah Waliullah, this topic will be broken down, would be divided into four subcategories, subparts, which are also your examination based questions as well. So the very first topic, the very first question of this topic, that is Syed Ahmed Shaheed Barelvi, is who was Syed Ahmed Shaheed Barelvi? Again, as I told you in multiple classes, the dates are of essence and date are of very important, of extreme importance. Syed Ahmed Shaheed Barelvi was born in 1786. He died in 1831. Dates are very important. He was born in the district of Rai Bareli. That is why he was given the title of Barelvi, belonging to the tribe, to the place of Bareli. So he was born in Rai Bareli in 1786, got his early education from Madrasa Rahimia under the tutelage of Shah Waliullah's sons. Shah Waliullah died in 1762. We have already studied that in the previous topic. So he studied under the sons of Shah Waliullah and got education at Madrasa Rahimia. Further, he was more a man of action. Now, this is a very important phrase when it comes to Syed Ahmed Shaheed Barelvi. Syed Ahmed Shaheed Barelvi को जो describe करता है phrase वो है he was a man of action. वो जो थे आपके पास ज्यादा एक्शन पे बिलीव करते थे. Therefore, after initial years of learning Islamic education, of absorbing all the religious education from the madrasa, he then decided to join the military force of the Pathan military tribe leader, whose name was Amir Khan. So he joined the forces of Pathan military chief, whose name was Amir Khan, and there, because as I said, he was a man of action. तो एक्शन करने के लिए आपके पास वेपनरी चलाने आनी चाहिए, और उस जमाने में आपके पास तलवारों का दौर खत्म हो रहा था, मॉडर्न वेपनरी आ रही थी, यूरोपियन वेपनरी आ रही थी, गन्स आ रही थी, डिफरेंट मोर आपके पास एडवांस वेपनरी आ रही थी, उनको चलाना चाहिए. So आपके पास he learned how to use modern European weaponry in the army of Amir Khan. And because he was a man of piety, righteousness, great faith, and he had leadership skills, so he very quickly rose amongst the ranks of Amir Khan in the army and was soon given a command of a group of people, and he was responsible for their overall development, for giving them guidance, for leading them into prayers, and for also leading them into war. So soon he became a very popular and dominant figure in the army of Amir Khan. There he served, but later on he decided to find his own jihad movement. Now, अब आपके पास ये तो हमने देखा कि सईद अहमद शहीद बरेलवी का इंट्रोडक्शन था कि हु वाज सईद अहमद शहीद बरेलवी. अब हम देखते हैं कि सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने जो काम किए वो क्यों किए. तो अब जो सवाल है वो दो तरीकों से आता है. एक सवाल तो ये आता है आपके पास कि व्हाई डिड सैयद अहमद शहीद बरेलवी विश टू रिवाइव इस्लाम इन द सबकॉन्टिनेंट. और यही सवाल दूसरे तरीके से आता है जो इनकी मूवमेंट का नाम था, व्हाई डिड सैयद अहमद शहीद बरेलवी फाउंड द जिहाद मूवमेंट. भाई जिहाद मूवमेंट भी इनका काम था. जिहाद मूवमेंट क्यों स्टार्ट की, या इनके जो बिलीफ्स थे, जिहाद मूवमेंट का काम ही था ना, तो इन्होंने जिहाद मूवमेंट क्यों किया, इन्होंने जो काम किए वो क्यों किए. दोनों एक ही बात होगी. तो विश टू रिवाइव इस्लाम द सबकॉन्टिनेंट या व्हाई डिड ही फाउंड द जिहाद मूवमेंट, दोनों एक ही सवाल आते हैं और दोनों आपके पास पास्ट पेपर्स में आए हुए. नाउ हाउ यू विल आंसर दिस क्वेश्चन, कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, वो एक मेजर चैलेंज है. 7 मार्क. अगेन पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए, 3 पैराग्राफ्स होंगे, ईच पैराग्राफ वुड बी ऑफ 6 to 8 लाइन्स. पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि शाह वलीउल्लाह बिलीव्ड दैट मुस्लिम्स शुड बी रूल्ड बाय फेलो मुस्लिम्स. मुस्लिम्स के ऊपर दूसरे लोग हुकूमत ना करें, मुस्लिम्स के ऊपर फेलो मुस्लिम रूलर्स ही हुकूमत करें. एंड एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम
मुस्लिम्स के साथ ऐसा नहीं हो रहा था, अभी हम आगे जाके देखेंगे। तो शाह वलीउल्लाह ने जिहाद मूवमेंट का स्टार्ट करना या रिवाइवल ऑफ इस्लाम का स्टार्ट करने का मेजर मकसद क्या था? उनको लगता था कि मुस्लिम्स शुड बी रूल्ड बाय फेलो मुस्लिम्स। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो हमने आपको अभी पहले पिछली क्लास में बताया था, मैंने आपको बताया था कि वो सदाबहार पॉइंट है, वो हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगा। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम मुस्लिम्स हैड फॉरगॉटन द ट्रू प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। कंप्लीट जो बिलीव्स ऑफ इस्लाम थे वो करप्ट हो चुके थे, एंड मैनी अनइस्लामिक प्रैक्टिसेस हैड क्रेप्ट एंड एंटर्ड इनटू द फोल्ड ऑफ इस्लाम। सो देयरफॉर टू करेक्ट मुस्लिम बिलीव्स, to correct Muslims' corrupt practices, Sayyid Ahmed Shaheed Barelvi decided to start and revive Islam in the subcontinent and decided to find the jihad movement. And lastly and very importantly, the third point, Sayyid Ahmed Shaheed's jihad movement. अब jihad movement था क्या? Jihad movement was basically an armed struggle, weapons के through, struggle against the oppression of the non-Muslims. ऐसे नहीं non-Muslims को जाके मार दो, ऑपरेशन, जो मुस्लिम्स के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे, मुस्लिम्स को आपके पास परसिक्यूट कर रहे थे, उनके खिलाफ आर्म्ड स्ट्रगल, आर्म्ड ऑपरेशन, फाइट इन द वे ऑफ अल्लाह, दोज हू फाइट यू, इस तरीके से हुक्म है। तो सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने जो जिहाद मूवमेंट फाइट स्टार्ट की, उसकी वजह थी मुस्लिम्स के ऊपर जो परसिक्यूशन हो रही थी, स्पेसिफिकली इन द रीजन ऑफ पंजाब एंड एनडब्ल्यूएफपी, where Ranjit Singh was ruling. And under Ranjit Singh, Muslims faced extreme atrocities. They were not even allowed to pray. Massages, mosques were converted into stables. वहाँ घोड़े रखे जाते थे. So those were the atrocities and persecutions being carried out against Muslims in the regions of Punjab and NWFP. And therefore, to liberate the Muslims out of this atrocious and oppressive rule, Syed Ahmed Shaheed Barelvi decided to find the jihad movement, and that was the reason Syed Ahmed Shaheed Barelvi started the jihad movement and wished to revive Islam in the subcontinent. So these are the 3 points that you'll be elaborating and writing in your 7-mark question. I hope you get it. Now, in the next video, we will see the works of Shah Waliullah and the significance of the works of Shah Waliullah.